everyone, welcome to a new lecture. So as you can see from the title, we are going to continue our previous lecture where we were discussing about a previous question paper of NET. So in that lecture we have already discussed 10 questions of the July 2018 paper, and now we'll be moving forward with the same paper. So I hope you all have viewed the lecture regarding the syllabus analysis and the previous paper analysis that we have done, and certain other introductory lectures that we have started. If you have not, kindly look at that first, because then you will have a better idea of whatever we are going to discuss today. So without wasting much time, let's begin with our previous paper discussion. Now we'll be beginning with 11th question, as we have already discussed 10 questions. And before beginning, I would like you all those who are watching, kindly drop in a comment so that I know who all are there, and accordingly we can begin. Alright, so I'm just giving you 10 seconds. Please type in your names or say a hello or anything so that I know you all are present, and then we can begin our lecture. Okay, so I can see Akshita Joshi. Hello Akshita. Yeah, okay, we are beginning. Okay, so let's begin with 11th question. So the question is, who among the following is the author of Account of the Augustan Age in England, which was published in 1759. So this was a work which was published in 1759, and they're asking us the name of the author. Alright, so out of these, John Gay, Oliver Goldsmith, Hazlitt and Johnson, please drop in your answers if you know who was the writer of this work, the author, the Account of Augustan Age in England. Okay, Swarnim has joined us. Hello Swarnim. Okay, so what is the answer to this question? The answer is number 3, that is Oliver Goldsmith. So Oliver Goldsmith wrote this work where he talked about the Augustan Age. So Augustan Age, in it includes Neoclassical Age and the Restoration Age also of England. So all these things are included in this work, and 1759 में ये work published हुआ था, we can say in the mid of 18th century, and during that time he wrote about the Augustan Age, किस तरह का developments था, literature में क्या development था, society, political etc. All these things were included. Now if you look at the options, कंपैरेटिवली जिस तरह के ऑप्शंस यूजीसी देता है और क्वेश्चंस में, उसके कंपैरिजन में काफ़ी इजी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि सी विलियम हैजलिट, सैमुअल जॉनसन एंड दीज पीपल बिलोंग टू डिफरेंट एजेस ऑल टुगेदर. तो अगर आपको एजेस का भी आइडिया होगा ना कि अगस्टिन एज एंड ऑलिवर गोल्डस्मिथ वो किस टाइम पीरियड में लिख रहे थे, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. ओके, दैट इज़ वाई being thorough with your history is very important. All right, so the answer is Oliver Goldsmith. Second is, in how many parts did Cervantes publish his novel Don Quixote? So Don Quixote is a very famous work by Cervantes, a very important Spanish work. Spanish golden age को represent करता है, जो Spanish literary golden age है उसको represent करता है ये work Don Quixote. So we are asking, they are asking us how many parts did it got published. Okay, कुछ parts में publish हुआ था, different time period, बीच में gap था काफ़ी years का, उसके बाद ऐसे parts में divide हुए थे. तो they are asking us which how many parts it was divided. So can you answer कि Don Quixote was divided into how many parts? So the options are 3, 5, 2 and 12. So the answer is 2. Don Quixote was divided in 2 parts. Okay, and can anyone tell me the years in which those 2 parts got published? So the years were 1605 and 1616. Okay, these were the 2 parts. So first part was published in 1605 and another part respectively. All right, so let's move on to the next question, that is question number 13. So Lewton Strachey's Eminent Victorians, okay, this is the name of the work by Strachey. His work Eminent Victorians carries biographical sketches of writers and public figures. Identify the list below that correctly mentions those eminent Victorians. तो Strachey का एक work था जिसका title उन्होंने बताया Eminent Victorians.
बेसिकली ये जो वर्क था इसमें यू नो स्ट्रेची मेंशन्ड वेरियस प्रोमिनेंट विक्टोरियन पीपल, उनकी लाइफ के काफ़ी सारे इवेंट्स उनके बारे में उन्होंने इस वर्क में लिखा था. And these people belonged to different backgrounds. Okay, some of them were politicians, some of them were you know, educationists, academics, writers, dramatists, etc, etc. So any person who had a influence on the society of that time was included in this work by Strachey. So the question is कि हमें नाम बताना है कि कौन कौन से लोगों को Strachey ने इसमें include किया था अपने work में. All right, so if you know the answer to this question, that who all are involved in this work. Okay, so the answer is option number 1, that is Cardinal Manning, Florence Nightingale, Thomas Arnold and General Gordon. So see, you can see from the names only that these people belonged to different backgrounds, but all of them were included in this collection, which was eminent Victorians. All right. With this we move on to our next question, that is question number 14th. One of the following statements about the eponymous saint of Dryden's song for St. Cecilia's Day. Now Dryden is a very important name of the 18th century. ठीक है, जो हमारी अगस्टिन एज है, रेस्टोरेशन एज है, उसको represent करते हैं ड्राइडन एक तरह से. ही इज़ ऑल्सो, यू नो, इट हैज़ बीन अ ट्रेंड इन लिटरेरी हिस्ट्री दैट कई बार हम एक एज को एक राइटर के नाम से भी जानते हैं. जैसे रोमांटिक एज है, कई बार हम उसको एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी बोलते हैं. मॉडर्न एज है, कई बार हम उसको एज ऑफ एलियट भी बोल सकते हैं. या फिर जैसे हमारी से शेक्सपियरन है, तो एज ऑफ शेक्सपियर किस एज को बोलते हैं? एलिजाबेथन एज को. तो ये क्या होता है, कई बार जो हमारी एजेस हैं उसके कुछ एक दो राइटर्स ऐसे होते हैं जो मेजर प्रोमिनेंट राइटर्स होते हैं, उनके एक तो वर्क्स भी. ओके, गुड मॉर्निंग अक्षता, या विल कंटिन्यू. सो उन काफ़ी सारी जो हमारी लिटरेरी एजेस होती हैं, इसमें कई सारे राइटर्स कई बार ऐसे होते हैं हु आर यू नो हुज वर्क एक्चुअली represent all the characteristics of that age. Now all is not necessarily compulsory, but most of the characteristics. तो फॉर एग्जाम्पल एलिजाबेथन एज है, उसकी जितनी भी राइटिंग टेक्निक्स उस टाइम पे यूज़ हो रही हैं, ड्रामेटिक टेक्निक्स, पोएटिक टेक्निक्स, जो भी उस एज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो एज पेक्यूलियर बन जाती है, ये यूनिक बन जाती है, उन सारी एज जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स हम शेक्सपियर के वर्क्स में देख सकते हैं. तो इसीलिए हम उस एज को कई बार एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं. इसी तरह एज आई टोल्ड यू, रोमांटिक एज को हम एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी बोलते हैं, विक्टोरियन एज को हम एज ऑफ टेनिसन भी बोल सकते हैं, राइट. इन द सेम वे न्यू क्लासिकल एज और द रेस्टोरेशन और द अगस्टन एज, वी हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एज, is often time known as the age of Dryden. All right, so John Dryden is a very important writer when we do this literary period, so please focus on him and his various important works. यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है उनके वर्क से सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे इज इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई दैट स्टेटमेंट. तो इनका एक हमें वर्क दिया है सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, उसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स लिखे. अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब वो उस वर्क के ऊपर फिट नहीं बैठता है. अगेन एज इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो भी डिस्कस कि जब हम प्रीवियस पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कुछ हेडिंग्स के अंडर हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है. जैसे मैंने आपको हेडिंग्स बताई थी कि आपको पहले तो एजेस वाइज पढ़ना है, राइटर्स पढ़ना है. जब आप राइटर के वर्क्स के बारे में व्हेन यू आर स्टडिंग, सो आई विल जस्ट गिव यू अ हेडिंग कि हाउ यू कैन मेक योर नोट्स. ऑल राइट, सी the more structured your input will be while preparing, the same way your output will be structured during the exams. तो कई बार होता है कि when we are sitting in exams our mind gets all cluttered and you know blank हो जाते हैं and आंसर नहीं आता है, नर्वस हो जाते हैं. इस तरह के reactions often times many students complain about it. वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपने इतना डिसऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपेयर किया होता है, आपने अपने माइंड को जो इनपुट्स दिए हैं वो इतने क्लटर्ड वे में दिए होते हैं कि इट्स इज़ नॉट ईजी फॉर योर माइंड टू यू नो रिकलेक्ट इट एट द टाइम जब आपको ज़रूरत है. इसीलिए जब भी यू नो प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ट्राई टू मेक इट मोर स्ट्रैटेजिक, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, जिससे कि जब आपका इनपुट का, जब आपके आउटपुट का टाइम आए, जब रिकलेक्शन करना हो आपको जो भी आपने पढ़ा है, रिवाइज करना हो, तो वो भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से आपको रिप्लाईज मिल सके. ऑल राइट, तो इसीलिए जब आप लिटरेरी वर्क्स को पढ़ रहे हो तो आई सजेस्ट यू टू मेक अ टेबल. ऑल राइट, एंड आई गिव यू सर्टेन हेडिंग्स, यू कैन राइट दैम डाउन. इस हेडिंग के अंडर आप अपनी वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैसे टेबल बनाया,
राइट, लाइक दिस। यहाँ पे आपने वर्क का नाम लिख लिया, यहाँ पे आपने राइटर का नाम, ठीक है, राइटर और वर्क का नाम लिख लिया। अब यहाँ पे आप कुछ हेडिंग्स लिख दो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वॉल्यूम जहाँ पे वो पब्लिश हुआ था, टाइटल कहीं से अगर लिया गया है, कई बार होता है कि जो टाइटल्स होते हैं वो किसी और वर्क से लिए गए होते हैं, किसी क्लासिकल वर्क से लिए गए होते हैं, तो टाइटल कहाँ से लिया गया है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर ड्रामा और नॉवेल्स आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ स्पेशल फोकस करना कैरेक्टर के नेम्स के ऊपर, ठीक है। तो नेम ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल थीम जो है नॉवल की वो लिख लो यहाँ पे। तो 2-3 लाइन्स यू विल राइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो यू विल हैव अ table in front of you. So when you'll be revising, say 3 days before the exam, when you come to revise, you will have the entire table of different works and you just have to go through. Otherwise अगर हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं या बुक्स में मार्क करते हैं ना, तो इट गेट्स वेरी hodgepodge when we are revising it. टैब्यूलर फॉर्म में रहता है तो आपको इंस्टेंटली जो चीज़ें याद भी होती हैं, क्योंकि आर ब्रेन मेक्स एसोसिएशंस, राइट। सो यू विल रिमेंबर इट इन अ बेटर वे। सो ये हेडिंग्स है कुछ, मुझे मैंने आपको बताया, ईयर है, पब्लिकेशन है, वॉल्यूम है, देन सर्टेन टाइटल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कैरेक्टर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्या है उस वर्क का, ओवरऑल थीम क्या है उस वर्क की। देन कई बार कुछ वर्क्स होते हैं जिनके अंदर कुछ पेक्यूलियर क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो उस वर्क से जुड़े हैं, जो उस वर्क को थोड़ा यूनिक बनाते हैं, तो वो कुछ फैक्ट्स है जो आप लिखो। जॉनर स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कि किस जॉनर को बिलोंग करता है, या कोई अगर स्पेसिफिक टेक्निक है, लिटरेरी टेक्निक है जो उस राइटर ने अपने उस वर्क में यूज़ की है, प्लीज़ राइट ऑन दैट। सो ये कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो आप उस टेबल में लिख सकते हो, और यू डोंट हैव टू राइट इट इन मच डिटेल, क्योंकि प्लीज़ keep in mind we are preparing for an objective exam, so accordingly we have to prepare, all right। तो objective exam के लिए आप prepare कर रहे हो तो prepare it that way only। तो वही चीज़ें focus on more on those things which could be asked objectively, तो वो आपने सारा लिख लिया, एंड देन यू विल हैव अ टेबुलर फॉर्म। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे सेंट सिसिलियाज डे, अब इन्होंने 4 स्टेटमेंट दिया, हमें चूज़ करना है कि कौन सा गलत है। तो ये इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपको ये पता होगा कि उसका ओवरऑल थीम क्या था। देखो, लाइन टू लाइन हर वर्क को पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल, ऑल्दो it is advisable that you try to read as many works as possible line to line, but it's not possible to cover everything that is given in net syllabus because the syllabus is very wide। तो कुछ works जो important है जिनकी we have the entire detailed series on them, कुछ works जो important है उनको you have to read line to line, कुछ works जो important है उनको you don't have to read line to line, you just have to have an overall idea about it, ठीक है। तो then also you can attempt certain questions। तो जैसे सॉन्ग सिसिलियाज डे के बारे में जब आप ये 4 सेंटेंस पढ़ोगे, तो अगर आपको ओवरऑल थीम पता होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट उस थीम पे फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। सो लाइक द 4 स्टेटमेंट्स आर: सेंट सिसिलिया वाज अ रोमन लेडी, एन अर्ली क्रिश्चियन मार्टियर, सेंट सिसिलिया वाज एन अर्मेनियन डिवोटी ऑफ द क्रिश्चियन फेथ, थर्ड इज सेंट सिसिलियाज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 November in England, and fourth is Saint Cecilia was a patroness of music who was fabled to have invented the organ। So out of this, which one is the answer? So I'm giving you 2 seconds. If any one of you know the answer, kindly write it. So the answer is option number B, that is Saint Cecilia was an Armenian devotee of the Christian faith. This is wrong, matlab wrong in the sense it's correct answer but wrong statement about Saint Cecilia। So from this let's discuss कि Saint Cecilia किस बारे में था, क्योंकि बाकी जो 3 है they are correct description about what this poem was। So Saint Cecilia was a Roman lady and early Christian martyr। तो कौन थी Saint Cecilia? She was a Roman lady, ठीक है। तो she was not an Armenian devotee but she was a Roman lady, and she was a very early Christian martyr who died for the cause of the Christ, okay। Then third statement is also correct, that Saint Cecilia's festival is celebrated on 22nd November in England। तो Saint Cecilia's festival होता है which is celebrated in United Kingdom on 22nd of November, okay। This is also correct। Then Saint Cecilia was a patroness of music। She is actually known as the patroness of music, someone who inspires musical devotion, etc। So she is a patroness of music, correct, who was fabled to have invented the organ, and some legends say that she was the person who actually invented the organ, a musical instrument that is oftentimes used in the notes and songs of English music, all right। So these are the 3 statements about song of Saint Cecilia। Saint Cecilia's day, please remember यहीं से कि 22nd November को celebrate किया जाता है Saint Cecilia's day, and these are some of the facts about it। So she was a Roman lady and not an Armenian lady। तो अगर आपको ओवरऑल थीम भी पता होगा कि सेंट सिसिलिया के बारे में था, तो सेंट सिसिलिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रो आप पढ़ोगे, जब आप इस पोइट्री के बारे में नोट्स बनाओगे तो यू विल कम टू नो कि शी इज़ अ रोमन लेडी, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए अटेम्प्ट करना कि शी इज़ नॉट एन अर्मेनियन, शी इज़ अ रोमन पर्सन, ऑल राइट।
Question number 15th. Which of the statements on Michael Roberts' Faber Book of Modern Verse is not true? So in this question you have to identify that out of these which one is not true about this Faber Book of Modern Verse. ये एक poetry का collection था. All right. So this anthology canonized modern poetry and poets for quite some decades. Okay, the collection begins with the poems of Robert Bridges. Roberts omitted the Georgian poets in his anthology. Yeats, Eliot and Pound find a place in the Faber Book of 1936. So out of these the answer is number 2, that is the collection begins with the poems of Robert Bridges. मतलब ये जो ऑप्शन है दिस इज रॉन्ग इन द सेंस कि ये इस स्टेटमेंट के बारे में एक फॉल्स, ये एक वर्क के बारे में एक फॉल्स स्टेटमेंट है. सो द कलेक्शन बिगिंस विद द पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्रिजेस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट दिस. तो राइट स्टेटमेंट्स क्या हैं? मॉडर्न वर्स जो था, फेबर बुक ऑफ मॉडर्न वर्स, तो इट वॉज पब्लिश्ड बाय फेबर एंड फेबर. इट्स अ वेरी फेमस पब्लिकेशन हाउस ऑफ इंग्लैंड एंड मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट English writers have got their work published through Faber and Faber. All right. T.S. Eliot was also associated with it. सो उनका एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री उन्होंने पब्लिश किया था 1936 में. ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. दिस एंथोलॉजी कैननाइज्ड मॉडर्न पोइट्री एंड पोएट्स फॉर क्वाइट सम डेकेड. दिस इज करेक्ट अबाउट दिस एंथोलॉजी. मॉडर्न जो पोएट्स थे, देखो 1936 में पब्लिश हुआ है, वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब मॉडर्न पोइट्री अपने बैंड बिल्कुल टॉप पे थी. तो मॉडर्न पोइट्री के काफ़ी सारे वर्क्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑलरेडी पब्लिश हो गए थे. जैसे 1922 में यूलिसीज was not a poetry, it's a novel, but it's a very important modernist work. Wasteland by Eliot, a very important modernist poetry. All these works were already published till 1936. So 1936 में Faber and Faber collected all these important modernist poetries and they compiled them in a volume and they published it under the name Modern Verse. So you can identify from the name itself that the title is Modern Verse, talking about modernist poetry. So yes, obviously this one is correct. Third, Roberts omitted the Georgian poets in his anthology. So इसके जो compile जिन्होंने किया था उनका नाम था, जो compiler थे, it was Michael Roberts. So he omitted Georgian poets in his anthology. Yes, he omitted Georgian poets हैं जो 20th century के initial time पे, before World War I, जो initial decade है 20th century का, उस time पे जो poets लिख रहे थे during the reign of King George and King Edward, उनको हम Georgian poets कहते हैं. And Roberts didn't include this group of writers in his work. It's correct. Fourth, Yeats, Eliot and Pound find a place in the Faber Book of 1936. Yes, correct. So Yeats, Eliot and Pound, many of their important poetries were published in this work, and as you can know by the name itself, these three are sometimes treated as the representatives of the modern poetry. Oftentimes Yeats' work like The Second Coming is a very important work. Then Ezra Pound is considered as a person who actually initiated the modernist movement. His phrase make it new, ठीक है, ये phrase के ऊपर भी काफ़ी सारे questions आए हैं कई बार. make it new मतलब modernism में main जो एक agenda था writers का, poets का, that was make it new. Whatever you are doing, do it in a new way. Whatever you are doing, even if not in literature only, you are creating something, you are sculpting something, you are painting something, you are building a house or anything you are doing it, make it new. This was the agenda of the modernist age that was that people was going through. So, and this is credited to Ezra Pound only. So these three are very important writers and very important names in the development of modernist thought of the 20th century. So obviously their works will find a place in a collection which talks about modern poetry. Okay, so Modern Verse in 1936, a volume was published, compiled by Michael Roberts, published by Faber and Faber, and it included all these three things. But this it did not include that it didn't start with the works of Robert Bridges.
All right, sorry for the interruption. Let's move on to the 16th question. So the 16th question asks us, who among the following proposed that the first Gulf War had never taken place? It was simply a hyperreal media generated spectacle. So the Gulf War, a very important event of the 20th century, the end of 20th century. So one of a very important critic and one of a very important analysis, analytical writer of 20th century said, and the उनका जो work था उसका title भी यही था कि the Gulf War never took place. Now this was a very controversial work क्योंकि Gulf War actually happened. So how can someone say that it didn't take place? So basically the answer to this question is Jean Baudrillard. Okay, third one is the correct option. So what Baudrillard wanted to focus here was that war was happening, but it was more a war on technical front. मतलब इस war में, Gulf War में जितना ज़्यादा use media propaganda and technical developments का लिया गया था, because of that, what he's saying, it was kind of a hyper real reality that was created with the use of the media elements and with the use of the power structures. The power structures in the sense that in today's scenario, if we talk about whatever power structures are there, the media is one of a very important power structure, because media actually directs the thought or directs the thinking pattern of the entire population, right? So Baudelaire's focus here is that Gulf War was there, but what was the necessity of Gulf War, or how can you legitimate going on a war with another country on certain petty issues, all right, or whatever it was. He said that it was more inclined, जितना एक अर्लियर जैसे हम देखते थे कि हमारे पास रीजंस होते थे वॉर के, लेकिन इस वॉर में ज़्यादा इनपुट या हम कह सकते हैं ज़्यादा एक्टिव पार्ट जो था वो मीडिया का था अकॉर्डिंग टू हिम. सो दैट इज़ वाई ही सेज दैट इट वाज अ hyper real media generated spectacle. This is what he calls this Gulf War. उनका जो work है 1990s में, it was published, the title was Gulf War Never Took Place. All right, it's a very important work. When we read the literary theory, there we discuss it in detail, because Baudelaire's work are considered very important, especially जब हम post modern age के बारे में, contemporary times के बारे में, political dynamics, when we try to study international relations and how media plays a kind of a very provocating or also a very influential role in today's political relations among different countries and different generations, etc. So this is all studied in the literary theory part only in our lecture series. So there we'll be discussing about it in more detail, because this is an advanced level question which I don't expect the junior level who are just starting with their preparation after say grad or first year of their post graduation. So we'll discuss it in detail there. Then 17th is, Sir Thomas Browne's urn burial was prompted by. So this is a question about Thomas Browne's work, urn burial. So means they're asking us about the background, that how this work was prompted. All right, so the answer is option number 1, that is the discovery of ancient burial urns near Norwich. Okay, so थॉमस ब्राउन का वर्क था अर्न बरियल, उसका बैकग्राउंड वो एक तरह से आपसे पूछ रहे हैं. सो द ऑप्शंस जो हमें दिए गए थे वो था डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट बरियल अर्न्स नियर नॉर्विच, द कंटेम्प्रेरी रिसर्चर्स ऑन बरियल राइट्स इन नॉर्वे, द डेथ ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी एंड हिज बरियल, द पब्लिकेशन ऑफ द इंग्लिश बुक ऑफ कॉमन प्रेयर. ऑल राइट, तो ये 4 हमें ऑप्शन दिए गए थे कि किस मतलब उसका बैकग्राउंड आपसे पूछा है कि किस इवेंट से रिलेटेड है इस वर्क का आइडिया. ऑल राइट, सो द आंसर इज डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट बरियल अर्न्स नियर नॉर्विच. ये एक नॉर्टन जो हमारी माइथोलॉजी है, नॉर्विच नॉर्वे को बिलोंग करती है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के थ्रू. सो वहाँ की एक माइथोलॉजी से रिलेटेड, एक लेजेंड से रिलेटेड था इस वर्क का टाइटल. और नॉर्विच माइथोलॉजी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम अपने वर्क्स में देख सकते हैं, इंग्लिश वर्क्स में स्पेसिफिकली अगर हम फोकस करें, लाइक ग्रीक माइथोलॉजी, Norwich mythology, all these mythologies play a very important role in shaping the mindset of English writers. इसीलिए उनके वर्क के काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें दिखते हैं. For example, if you talk about the Indian scenario, many a times it happens that when we talk in everyday life also, we give the references of our mythologies, like for example Mahabharata, or these are the mythologies that we read. Since we have been listening about them from our childhood,
That is why when we are talking in our everyday life, the references come on our mind. Okay, in the same way, in the English scenario, if we talk about Greek mythologies, Norwich mythologies, people have been listening about them from their childhood everywhere around them. So when they write certain work, these things comes naturally out of them. All right, दैट इज़ वाई जब हम वर्क्स पढ़ते हैं तो काफ़ी बार हमें रेफरेंस मिलता है ग्रीक माइथोलॉजी का स्पेसिफिकली, बिकॉज इट्स फॉर देम लाइक अ बेसिस ऑफ ऑल द माइथोलॉजीज दैट दे स्टडी. ओके, सो व्हेन यू आर डूइंग तो ग्रीक माइथोलॉजी के काफ़ी सारे जैसे ज़्यूस, हेरा, देन देयर चिल्ड्रन एंड अबाउट वेरियस वहाँ पे जैसे गॉडेस ऑफ वॉर, गॉडेस ऑफ वाइन, गॉडेस ऑफ एनीथिंग लाइक कॉमेडी एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, गॉड ऑफ वॉर, इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स आर देयर एंड दे हैव स्पेशल रेफरेंसेस इन वेरियस वर्क्स. कई बार उनके थ्रू स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है प्लॉट में और इन्फ्लुएंशियल चीज़ें डालने के लिए, एलिमेंट्स डालने के लिए. सो यू नीड्स टू बी लिटिल थरो विद ग्रीक माइथोलॉजी, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन नेट एग्जाम इफ यू फोकस अपॉन. बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं ग्रीक माइथोलॉजी से, तो प्लीज़ गेट अ ब्रीफ आइडिया. वो आपको तब भी कवर हो जाएगा जब आप ग्रीक माइथोलॉजी के या ग्रीक लिटरेचर के कुछ ड्रामाज है, जैसे सोफोक्लीज का एडिपस है, एंटिगनी, देन सम अदर एक्लीज के कुछ ड्रामाज हैं विच यू विल बी you have to like read for the net exam of course. So there also you'll have a brief idea. Otherwise also I'll suggest to just try to read about Greek mythology a little bit, as we have already covered it in our lecture, so you can take help from there. So please have a brief ideology about Greek and Northern mythology. All right, see, this question is also from that same thing. All right, so next is our question number 18th. All right, so question number 18th starts with identify from among the following list those that cannot be called war fiction. So now they have given us 4 options. Modern Instance, The Age of Innocence, Catch-22 and The Naked and the Dead. This is some misprint here, please ignore this. All right, this is not related to this question, or it's some error. All right, so there was a series of war fiction that was written. So war fiction होता है basically जिसका background war से related होता है, either world wars or any other war, और उस background के ऊपर some fiction is created, like the story is not real life story but a kind of a fiction. तो हमें choose करना है कि इनमें से कौन सा work war fiction नहीं है. Modern Instance, Catch-22, Age of Innocence, Naked and the Dead. So the answer out of these is option number C, that is The Age of Innocence. So Age of Innocence जो एक work था, it is not related to war. Out of these, तो हम इस question से we can learn this. Another thing is that कौन कौन से works war fiction हैं, तो that is Modern Instance, Catch-22, Naked and the Dead. Very important. War literature forms a very important part of the 20th century literature. एक specific genre के रूप में it is developing since like 20th century, even in 21st century. So war literature also deserves special attention when you are preparing for 20th century and 21st century, because major prominent writers हैं जिन्होंने लिखा है war के बारे में. As you have seen कि अभी भी हमने 1-2 questions ऐसे attempt किए which were talking about wars. All right, so out of this, Age of Innocence was not a war fiction, and these 3 had the background of different wars. Who among the following writers was not the one identified with the movement of 1950s England? So our options are Roy Fuller, Kingsley Amis, Philip Larkin and Donald Davy. The movement of 1950s England was a movement, and this term was coined in 1956 by J.D. Scott. All right, so J.D. Scott coined this term, the movement, in 1956, and the answer to this question is option number A, that is Roy Fuller. Means movement of 1950s England जो ये group of writers थे, ये कौन writers थे? These were the writers who were like people who specifically belonged like to English region, to England, जो specifically जिसको हम London and all these जो mainstream England हम बोलते हैं, like it excluded the writers from say Ireland or Scotland or Wales, which forms a part of United Kingdom. I hope you know United Kingdom includes 4 countries. All right, so England,
Wales, Scotland and Ireland. So this group, the movement of the 1950s England, specifically included only the writers who belonged to this mainstream England region, alright. So it excluded the writers from Ireland region, Scotland region and Wales region, whose works are included in the United, if we study the literature of United Kingdom, alright. So out of this the answer is Roy Fuller, because 3 of them belonged to English genre only, alright. So our next question is, which of the novels does not belong to Nuruddin Farah's Blood in the Sun trilogy? So Nuruddin Farahi's work, he was a Somalian writer, and out of these 4 options, which option will be the correct option for that? So उनकी एक ट्रायोलॉजी थी जिसका नाम था इन द सन ट्रायोलॉजी. तो ट्रायोलॉजी, एज वी कैन अंडरस्टैंड, देयर आर 3 वर्क्स इन अ ट्रायोलॉजी. सो आउट ऑफ दिस कौन सा वर्क उनकी ट्रायोलॉजी को बिलोंग नहीं करता है? सो मैप्स, गिफ्ट्स, नॉट्स, गिफ्ट, सीक्रेट. द आंसर इज नंबर 2, दैट इज नॉट्स. नॉट्स वाज अ वर्क दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन हिज ट्रायोलॉजी. Okay, so Notes was a work which was not included in his trilogy जिसका नाम था In the Sun trilogy by Nuruddin Farah. So remember, he was a Somalian writer and he wrote a trilogy जिसका नाम था In the Sun trilogy, और उसके जो 3 works थे, they were Maps, Gifts and Secrets. इसी sequence में publish भी हुए थे. First work of that trilogy was Maps, second one was Gifts and third one was Secrets, and Notes is not a part of that trilogy. So please remember, very important trilogy by Nuruddin Farah, a Somalian writer, and the works are Maps, Gifts and Secrets. So these were the questions that we were supposed to discuss today. I hope this was helpful for you, and many of you didn't respond to the answers in this question. I hope this will be improved in the next lecture. So I'll see you in the next lecture with another set of questions. Till then, happy learning. If you have any doubts, you can mail us your doubts, or you can contact the numbers that are given in the description box. So till then, happy learning. I'll meet you in the next lecture.